Hi, good afternoon. My name is Kushal Dev, and you are watching SMB Connect Spotlight. Our guest for this episode is Saumya Srivastava. Saumya is a seasoned chartered accountant with more than a decade of experience. She is also a strategic advisor at MSME Business Forum India. She is a member of the Women's Indian Chamber of Commerce. Hi, Saumya. How are you? I'm good, Kushal. How are you? I'm good. So, how do you feel about joining us today? I'm really thankful to you and the whole SMB Time Connect team for having me here. And I guess it's a great platform for not even me and for others who all are your members to have a kind of launchpad to discuss and connect and share the experiences. Thank you for having me here. Okay, Soumya, thank you. Thanks a lot. It's our pleasure to have you here. So I just want to start with your journey. How did it begin? Where is the inception of everything? See, since you already know that I am from professional background, and since I'm a second generation entrepreneur, so my first hand experience has been, witnessing how transformative business journey can be with a professional piece of advice. And I've seen, businesses growing at my end also, and when I used to work under my father also, how a good piece of governance advice can make the businesses go from surviving to thriving. So I think that was the basic inception which elated me to have that passion and curiosity. What else can be done? Because coming from a professional background, one thing I've also seen not only the ups and not only the rosy things, but also how the all those small nudges, running after the clients for payment recovery, knowing the worth, getting them to know what exactly needs to be done. So that always remained in my mind कि जब हम उनके बेहतर के लिए बोल रहे हैं, उनके betterment के लिए बोल रहे हैं, then why these people, they are not taking that in the same manner, and what are the loopholes that we can mend it. So I think जब मैंने अपना मतलब when I like took over this my system, so I always made sure that whatever the non-conventional things which are not being practiced earlier, I try to inculcate that in my terms and in my dealings with my clients and audience. So I think that's been the understanding which I had, and definitely that has made a change. Okay, how did you identify your niche, the market you are targeting, the group of people? See, Kushal, I think, when we talk about how do you identify a niche, what is your passion? So this is not a TV remote जो हमें पीछे मिल जाता है कहीं. It is always in us, and which can be, nurtured by way of proper grooming, proper identification and exploration. So not only in the professional industry, also in the corporate also, या जितने भी हम जो भी professionals हैं, experts हैं, I think the niche can always be discovered by knowing sometime or the other कि इसमें हमारा अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है. प्लस plus when particularly speaking about the advisory industry, niche has to be developed by constant upskilling, development, reading, and nurturing yourself in terms of not only academics but on all parts and all fronts. So जब मुझे लगा again like mentioning what I just said कि खाली एक एडवाइजर का रोल क्या होता था. जनरल आप भी जाओ अगर किसी अपने क्लाइंट से बात करो एंड इफ यूर एडवाइजर, हम कल एक इनवॉइस रेज करें कि हम उनको कंप्लायंस का एक बिल दे रहे हैं, उनको लिए हम कॉस्ट सेंटर होंगे. बट व्हेन वी project them as their revenue and growth partners and we help them in their strategies, so I think that isn't flipping the coin kind of thing कि जिसमें उनको लगता है नहीं ये खाली हमसे चार्ज करने हैं उसके लिए नहीं है. They would handhold us also. So I think that was the kind of, I don't know, niche is the word, but yes, I think that is my value addition in almost all of my clients. Ki compliance part is okay, that all conventional things are doing it, but how I can upscale them, handhold them in terms of not only the governance but also upscaling growth strategies, yeah, making their presence cross borders and other things also. So that kind of expertise I want to have, and which would they be beneficial about it. तो आप किसी का फायदा कराएंगे तो definitely वो आपको they you would be received with open arms. Can you tell me any specific instances of challenges that you must have faced and that must have triggered you or motivated you to do the way you were doing or to go in your journey or shape your thoughts? There are many, but
the entrepreneurial journey is, of course, not gender specific, first of all. Second thing, coming from a woman, it is always, it is always being hurdled, and we are tend to, be boxed into traditional approaches. Just since like you mentioned, ki, what are the basic troubles which we have? I think I like to speak it for most of the women over here, that we are constantly judged about our scalability and our potential. How अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो client might think, अरे if she is working here, वो रहने दो मैडम है, आपका मतलब घर पे तो नहीं काम होगा या आपके फैमिली को तो नहीं देखना होगा. तो this is our multitasking, which I think why the other person is more concerned about it. So again, boxing out into traditional boxes which they do, plus judgment होता है. When I मतलब very frankly, Kushal, when I've quoted fees, the most kind of things which people ask, अरे नहीं मैम आप तो कम में कर दो, as if expertise has some gender discount. No, it's not like that. It's not like that. अभी आप ये देखो ना कि चाहे आप कोई भी प्रोफेशन चूज करो, whether it's being a lawyer, being a doctor, being a CA, any profession, or even in any profession plus किसी उसमें करो, तो there is no specific discount sector for females. But when we charge our professional fees, आप अगर कोई women entrepreneur है, तो product या कोई category में भी है, they tend to have जबरदस्ती का कि आप एक तो अपना वर्थ आपसे अगेन एंड अगेन क्वेश्चन किया जाता है कि हमको उतना हमें मिल रहा है, आप कुछ कम कर सकते हो, एज इफ कि वी आर women are always seen as they can accommodate more and more discounts and more सामने वाले की expectations. Second, when I have taken a charge as also in my corporate career also, but when I shifted to my own practice, so there was a transition which I experienced. And होता क्या था, इफ अ मैन इज बॉसी, ओके सर ठीक है सर आज गुस्से में है, बट अगर इफ अ फीमेल इज बॉसी एंड इफ अ फीमेल इज टेलिंग यू, ओके कुशल व्हाई हैवंट यू डन दिस, इनका तो लगता है सर कैसे रहते होंगे, पता नहीं हस्बैंड के साथ क्या रहता है. दीज काइंड ऑफ कांस्टेंट वर्ल्ड एंड जजमेंट्स वी टेंड टू फेस. सो ये बिहेवियरल माइंडसेट्स भी हैं, नॉट ओनली in terms of work. So yes, there are certain kind of challenges, and yet there are many, because again, कमिंग फ्रॉम अ कंसल्टिंग थिंग, ये चीज बहुत नॉर्मल होती थी कि अगर कभी कोई ऐसी मीटिंग हो रही होती है जो ऑफ द थोड़े से ऑफ, आई काइंड ऑफ टेंड टू बी ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड इट, अरे मैम तो रात में आ नहीं पाएंगे आप, यू शुड आस्क मी, इट्स माई चॉइस, इट्स माई डिसीजन, दैट यू शुड रिस्पेक्ट इट. ओके, आई एम नॉट कमिंग, आई एम कमिंग, वट एवर टाइमिंग, दैट्स माई कॉल. समबडी शुड नॉट टेक अ डिसीजन ऑन माई बिहाफ. नहीं नहीं मैम को तो बच्चे देखने होंगे, नहीं आ पाएंगी. Do That is, you think that I'm not it's, taking that. yeah, do you think that this kind of behavior that are there among men maybe, or is it because of the stigma around the gender nowadays that is going on? See, It was everything like this takes a from little always. time. Sorry? Everything, see, these, the what a stigma and whatever the behavior we are talking about, that has been built over ages. It's Mm. not an overnight thing which have changed. And again, it would take their sweet own time to come over that. Though it is happening, yes, it is happening. I'm not saying it is not happening. In the metro cities, the support system is so good that now the male and female partners and doing it together. Plus offices में भी बहुत ज्यादा start हो रहा है. But जो एक inherent रहता है ना कुशल, वो एक रहता ही है. Mhm. That is changing with the period of time, but it would take So how do you kind often of yes. how do you often Sorry. how do you deal with this kind of issues that you are now elaborating us? How do you tackle those issues whenever you face them? What do you feel? What do you do? Yes, I think Kushal, this is not only with the female, it is with the men also. First thing, क्या होता है कि हम फीमेल्स पे हमेशा ज्यादा फोकस करते रहे, वो कैसे मैनेज कर रही होंगी. आई थिंक द हीट इज विद मेन एंड women both. Because men Now are when more expressive, right? when They come out with their problems. Women tend to be more like yes, हाँ वो अगर that's the गुस्सा करे ठीक communication है. pattern. That is also a type of stereotype, but no, may not be True, the true, same. true. Yeah.
No, again, like I said, it is happening over a period of time. Inclusivity has taken a whole lot of things, and corporates maybe now what I see is when I go to a meeting, अभी भी कम रहती है. मतलब if there are 10 people sitting in a conference, still there are only maybe one or at the max two women sitting over there. So वो चीजें तो हमको अपने आप को खुद एक्सप्रेस करनी पड़ेगी. एक तो फीमेल्स के लिए मैं कहूंगी कि दे नीड टू एक्सप्रेस वी डोंट नीड टू शाई आउट थिंग्स. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि एटलीस्ट आपको बोलने का एक मोटिवेशन आएगा. वी शुड नॉट बी शाइंग अवे फ्रॉम expressing ourselves, whether it is our opinion and whether it is our any value addition that we're bringing to the table. Mostly क्या होता है कॉर्पोरेट में आप भी काम कर रहे होगे, कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर डील चल रही होती है तो देर आर मेन ऑफ देर आर मेन ग्रुप्ड अराउंड एंड डिस्कसिंग द डील्स. बट व्हेन इट कम्स टू बर्थडे केक कटना होता है, अच्छा मैडम आप ये केक काट दो. Mhm. दैट इज अनदर थिंग कि वो चीज है, बट उसको नीश हम लोग खुद पहले सेटअप करते हैं एंड देन वी टॉक अबाउट ब्रेकिंग देम. तो द Mhm. थिंग इज डील करना इज ऑब्वियसली परसिस्टेंस. आपको अपना ग्रिट, आपको अपना एक्सप्रेशन रखना होगा, कॉन्फिडेंस होना होगा. हम अंडर वैल्यू करते हैं. मोस्ट ऑफ द फीमेल्स वी डू अंडर वैल्यू आवर वर्थ और ओपिनियंस. मेन के साथ क्या होता है कि जो मेल्स हैं आई गेस दे आर ऑल्सो बीइंग सपोर्टिव. सो व्हेन वी as a female, if you talk to me कि okay, you or some you, I will always support, yes, this needs to be changed. But I think the more impact it would do if the men around discuss this, that we need to change it. I think that would also help the environment around in the corporate or in any office to change that way. Mhm. Yeah, I understand there is a stigma, and most of them has to be come from men. Men has to take the first step to deal with it. So moving on, I want to know, how did you build your brand as an individual? What are the strategies you have applied? The brand, if we talk about being in the service industry, it's all about who you are and how you create trust, and it's about uh, how people perceive you per se. So brand is something what you deliver, how you pull challenges. Sometimes people say कि why are you telling these things out to people. So, for example, taken as a social media platform, if you want to tell your achievements, you want to tell your, whatever field you are in, I guess that is also something which the technology, the role of technology, basically what I'm referring to, which it should be amplified to achieve. Brand is built not over a period, built over a period of time. So, especially in the service industry, credibility आपकी बहुत important है. अपना again एक वर्थ हो. If you are sticking to a particular field, the maybe the professional charges to say about, or if you're into product category or into restaurant business, कोई भी आपका business हो, उसमें अगर आप अपना value maintain करके अपने उस charges पे या whatever quote you are referring to, you should stick to it. आई थिंक ये मुझे लगता है कि ये बेंचमार्किंग टू क्रिएट अ ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड नॉट बी इन द कैट फाइटिंग रेस. और जो होता है ना कि आपको लग रहा है उसमें उससे कम हमने काम कर दिया, कुछ कर दिया. दिस इज ब्रांड ओवरऑल. हाउ वी नीड टू क्रिएट ट्रस्ट, customer centric approach, amplifying technology for making out things, reaching out, and all these things over a period of time, how you are behaving with your employees, all these kind of things. That's a pure bucket system, all bouquet that one needs to be picked to for the brand to be established. And I guess the plus visible, being engaged with the with the in-house and out-house. In-house मतलब अपने employees के साथ, and out-house with the customers. I think that creates a bond. That also goes a long way. Mhm. So how do you think that small and medium businesses will be able to scale themselves effectively, their operations? Yeah, thank you. Thank you. I'm glad you asked this because, basically coming from a, segment where I am always very much, into how MSMEs would scale and think. I think challenges बहुत है. हम कहते हैं कि नहीं, MSMEs are the backbone, but there are different, many much challenges which I guess they are coming into their pathways. बहुत प्रॉब्लम्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस की बहुत कमी है. से फॉर एग्जांपल अवेयरनेस ऑफ स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, मार्केट ट्रेंड्स, दे डोंट टेंड टू रियलाइज दिस. तो फर्स्ट, हाउ व्हाट दे वुड लैक, they are lacking to know is what they should know. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, स्कीम्स हैं, फंडिंग स्कीम्स हैं, Mhm. वो उन तक कैसे पहुंचे,
फर्स्ट, एक तो ये उनका चैलेंज होता है। सेकंड, उसको हम अगर आप पूछे कि हाउ आई एम गोइंग टू address this issue as a professional, so I guess a platform is always needed, maybe like SMB Connect or anywhere, or the realization and importance of a professionals, ki how governance can go a long way to help them. And plus there are other stigmas which MSMEs hold, being receptive to change. Mhm. उनको लगता है जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, आ जाता है, दे शुड थिंक बियॉन्ड द सर्वाइवल। एक विजन, लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। सो उनके उसके हिसाब से ग्रोथ स्ट्रैटेजीज होती है। अब आई नो फाउंडर्स लाइफ इज फुल ऑफ chaos, Mhm. जस्ट इफ दे वोंट बी रीचिंग आउट ऑफ द बॉक्स, नहीं हो पाएगा, और खुद नहीं हो पाएगा भाई। इफ यू आर गुड इन डूइंग योर बिजनेस, लेट द गवर्नेंस, कंप्लायंस, प्रोफेशनल एडवाइस बी somebody else thing. You cannot excel in everything. That's the niche you talked about earlier. तो Mhm. सबका अपना अलग अलग वो होता है। प्लस फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत लैक करते हैं, प्लस उनका इंटरनल चैलेंजेस उनके बहुत रहते हैं। Technology adoption also. Mhm. टेक्नोलॉजी एडॉप्शन से बहुत टाइप के रहते हैं। आपके खुद के इतने सारे कनेक्शंस होंगे, आपके खुद के इतने जो होंगे, उसमें उनको नहीं पता होता होगा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, या कोई गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स डिप्लॉय करी है। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप इंडिया फंड है, ग्रांट है, सब्सिडी है, Mhm. नहीं पता होता है लोगों को। दे रिजोर्ट टू लो कन्वेंशनल वे ऑफ हैविंग अ लोन। Mhm. And most of the time, SMEs face a type of liquidity risk. I mean, they don't have, एग्जैक्टली। yeah, yeah, yeah. मैं आपको एक Good इंटरेस्टिंग question. एक फैक्ट बताती हूँ कुशल। व्हाट हैपेंड वंस, दिस इज अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस, सिंस यू लाइक मेंशनड अबाउट द चैलेंज। आई वाज वन ऑफ माय क्लाइंट इज इनटू हेल्थ केयर। तो डॉक्टर्स होते हैं, तो जैसे डायग्नोस्टिक लैब्स है या कोई भी है, वो अपना सारा, उनकी कोई भी मशीनरी है, फॉर एग्जांपल वो 80 लाख 1 करोड़ की आती है, तो Mhm. दे टेंड टू इन्फ्यूज देयर ओन मनी इनटू बाइंग दीज इक्विपमेंट्स। क्योंकि और टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, 2 साल 4 साल बाद डिग्रेड हो जाते हैं, बिकॉज नई Mhm. टेक्नोलॉजी आ जाती, वही Depreciating मशीन की assets, जगह no? कुछ अपग्रेड है। अब क्या होता है, उन्होंने सारा पैसा अपना कोलेटरल दे दिया, या अपना खुद का पैसा बर्न आउट कर दिया, गुड डॉक्टर्स कर दिया। सो लाइक आई टोल्ड देम कि सर इट्स गुड दैट, एंड मैं उनका ये सब खाली उनकी कंसल्टिंग मैंने उनकी कभी कभार करी थी। नाउ दे केम अप एंड ऐसे ही कुछ डिस्कस मुझसे कुछ और Profile करने is आए थे, also एंड a SMB strategic advisor, right? You have also experience as a growth yeah, advisor. so I asked them, you should explore, I guess, leasing as an option, because this would give you many much more effects, like than owning that machinery. It would keep you an asset light, and plus आप upgrade कर सकते हो 3 4 साल बाद, and आपको टैक्स में भी कुछ वो रहेगा। तो पहले वो रेजिस्टेंस रहे, एंड बिलीव मी कुशल, आफ्टर 2 years they came, after a couple of years they came, and they said, okay, now we want to, now the chunk what we are investing is a big amount, and I guess we need to explore this option as also. So why I mentioned this over here is just like you mentioned कि like SMEs जो होते हैं वो walled होते हैं, उनको questions, उनको नहीं लगता कि ये चीज के अलावा भी हमें कुछ करना है। तो but अगर if they are open to changes and discussions, then they can able to compare opportunity cost, and then take some wise decisions for their businesses. Okay, what are the risks associated with the small and medium businesses in the current economic landscape? Like we have seen the inflation going up, and even though it came down in November a little bit, but it is really up. And the growth rate is also falling down. And considering all that factor, what are the things you are looking at budget, expecting from the budget coming upcoming budget? सी आई गेस बजट तो इट्स जो होगा वो तो मैडम ही जानती है। बट इफ यू पर्सनली आस्क मी व्हाट आई शुड बी Specifically for व्यूइंग इट इज, SMBs. हाँ हाँ, so see, Kushal, obviously not. I think सबसे first breather तो obviously there would be a tax concession we all is expecting, and I guess it should be there. Reason being, it is an interesting thing to note. Corporate tax plus income tax, तो सबके अपने अलग स्लैब रेट्स है, बट इट वुड बी सरप्राइजिंग टू नो दैट इनकम टैक्स से रेवेन्यू अपने सरकार का ज्यादा है, ज्यादा देन कॉर्पोरेट टैक्स। बट कॉर्पोरेट्स क्या है, बड़े बड़े हैं, पैसे लोग कमा रहे, ज्यादा कमा रहे, बट द लार्जर चंक इज कमिंग फ्रॉम द इनकम टैक्स, दैट इज द इंडिविजुअल्स। सो दैट इज अ थिंग दैट वी नीड टू, दैट्स अ थिंग टू बी पॉन्डर अपॉन, कि हम लोग पे इंडिविजुअल्स पे ज्यादा पड़ रहा है, प्लस इंडिविजुअल्स स्पेसिफिकली द सैलरीड एम्प्लॉयज। So I think any kind of a breather from Madam would be a welcome move. And again, other things which we should,
be considering is from the budget point of view, it's like, normalizing cryptocurrencies. I guess that can be the thing which can be taken. अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है. We have virtual regulators like SEBI and RBI, but some dedicated regulation authority should be there because बाहर हम बहुत सारी चीजों पे इस पे कुछ हो रहा है. अभी we are like maybe with the numbers plus technology receptivity, it is not still here, but it might come in a future period of time. Education, the level of education plus the quality, it should be there. कुशल, इस आजकल क्या है ना, एम्प्लॉयड, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है हमारे कंट्री में, एंड इट इज अ वेरी Skill सरप्राइजिंग development थिंग. should be skill development should be primary initiative. Skill development is one thing, and educated unemployment something ki graduates are sitting unemployed, and it has a range of around I 5 to mean, 6%. I have spoken to some of them, some people, some advisor. They say that most of the educated youth are unemployable. You can't employ them. They are not skilled. So there is a gap between the education and academia and industry, right? There is a need to bridge that gap. अच्छा, दिस इज अ पैराडॉक्स. आप क्या है, यहाँ लोगों को मिल नहीं रहे हैं अपने टीम में लोग. इफ यू टॉक अबाउट द एम्प्लॉयर्स, वी आर ऑलवेज सेइंग अरे यार हमको तो अच्छी टीम नहीं मिल रही है. एंड ऑन द अदर साइड, हम यहाँ पे जो जनता है वो कह रही है हमारे पास जॉब नहीं. यू सी द गैप. ऐसा नहीं है कि जॉब्स है नहीं, जॉब्स जॉब्स बहुत है, और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है. इंडिया इज प्लेइंग ऑन नंबर्स. 150 करोड़ की आबादी है, उसमें अगर हम नंबर्स पे नहीं लेवरेज आउट करेंगे तो इट वुड बी won't be a boon for us Biggest anymore. So advantage I of guess India, that is the thing. India is our demographic dividend, right? It's the biggest advantage. That needs to be leveraged. That needs to be leveraged. तो yes, upskilling is very important. अब upskilling का मतलब ये नहीं होता है कि खाली हम ये आर्टिसंस और इन क्राफ्ट्समैन के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं. आप देखो, फॉर एग्जांपल, अगर मैं लॉ की बात करूँ, अपने लॉ कर किसी कॉलेज से करके निकले हो, बट अगर आप उससे ड्राफ्ट करा लो आज कोई कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट कुछ है, तो मे बी उस लेवल का नहीं हो पाए. एक 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 जो इंटर्नशिप कह लीजिए आप, या अपस्किलिंग कह लीजिए, या कोई भी ऐसी चीज होगी जिसमें हमें करना चाहिए. एंड आई थिंक दैट इज बोथ वेज. एन इंस्टीट्यूट और एनी ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारे खुद के ऑफिसेज होते हैं, दे शुड एब्जॉर्ब देम. प्लस द माइंडसेट ऑफ टुडेज यूथ, दैट ऑल्सो हैज टू बी रिसेप्टिव. उनको मेंटल हेल्थ पता है, उनको ये पता है कि मेरे ऑफर लेटर में कोट कितना होना चाहिए, बट उनको फिर ये चीज फिर भी बार्गेन नहीं करना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ देयर द प्रोडक्टिविटी व्हाट दे आर ऑफरिंग टू द कंपनीज. I may sound it a little bossy over here, but that is for their But own it's all right. benefit. You must deal with all this. I mean, I want to know how big is your team? See, yes, we have got branches here in like Pan India, and in Mumbai, in Kanpur, in Lucknow, and I'm heading the Delhi NCR. So we have like kind of, there are like 80 people, including, trained, semi-trained, and everybody, and we are all scattered here. It's a core team. So, yes, I think less You is more. micromanage most of your operations. नो नो, माइक्रो मैनेजिंग इज समथिंग, आई गेस एक टाइम के बाद डेलीगेशन इज इम्पोर्टेंट. माइक्रो मैनेजिंग में हम नहीं जा सकते हैं अगर हम एडवाइजरी में हैं. हमको मैनेजर जो ऑब्वियसली जो हमारे सीएज हैं, फॉर एग्जांपल द सीनियर्स, दे डू डेलीगेट थिंग्स टू द जूनियर्स, एंड इट्स अ हायरार्की दैट वी नीड टू फॉलो कि इतने लेवल तक आप देखेंगे, उसके ऊपर कोई चीज है, देन द अदर पर्सन, द अदर सीनियर वुड लुक आउट. तो माइक्रो मैनेजिंग समथिंग आई वुड से that we follow very diligently, but जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे करते हैं. Not within our team, but for the client, yes, we do, because we got paid for that. So yeah, how do you foresee the future landscape of women entrepreneurship? Yeah, future women of entrepreneurship is indeed very promising, and future is not just waiting to be, for the women entrepreneurs. In fact, it is waiting to be led by them and shaped by them. First thing, so it is indeed very promising. Plus, I guess all the buzz happening around women entrepreneurship, how the government is supporting all this. अब आप schemes भी देख लो. Again, I'm coming to schemes just to give you an idea कि how that is being, women trailblazer programs are being going on. Every financial institution is giving you so much of leverage and discounts फॉर फंडिंग फॉर फीमेल बिजनेसेस. सो ये सब क्या है, एक आपका इकोसिस्टम ही तो डेवलप हो रहा है ताकि आप फीमेल्स को बढ़ावा दो, इस चीज को बढ़ावा दो.
तो ये सब भी है एंड प्लस यस अब तो कॉर्पोरेट्स की अगर बात करें तो उसमें इंक्लूजन डाइवर्सिटी इतनी आ गई कि दैट समबडी हैज टू बी इन योर टीम फॉर द फीमेल पार्ट प्लस सेबी की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं फॉर लिस्टेड कंपनीज दैट इट इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर शुड बी देयर बट आई जस्ट होप कि सिंस आई एम आल्सो एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन सम ऑफ द लिस्टेड एंटिटी बट स्टिल आई होप कि rather than in a compliance people should take them or more than for their virtues in terms of their professional advice and not only कि एक statutory डंडा है इसलिए वुमेन को हमें रखना है. There should not be like a forceful. Exactly. It should not be forceful and statutory person. It should be like as per whatever value propositions we are bringing. Depending on what you are bringing to the team. Okay. So True. what advice would you give someone who is aspiring to be an entrepreneur, someone like you, or maybe your younger self, who is, if you are giving advice to your younger self? See, what I believe and I've personally believed is the alignment of, inner energies and the focus which you have. Consistency should be there. And this is not, आपको ये हर जगह कोड पे मिलता है, but practicing and execution is what all it matters. To the younger crowd, I would always say, and it's you are really lucky if you find a mentor in life because I didn't had at my early time and I wished I had Kushal really But because second क्या होता है generation कि entrepreneur, right? So you must have someone in your family. see it's not always about in the family that is again a myth some people like पहले के इस जनरेशन में कहता अपना काम है आप उसको करो जरूरी नहीं है कि हम उसको आइडियलाइज करें एंड फीमेल्स के लिए जब करो व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी इन स्कूल्स हमारे पास दो चार नाम होते थे इंदिरा नूई हो गया किरण बेदी हो गया उसके अलावा कुछ नहीं होते थे दूर दराज के में होता था अब आज की यंग जनरेशन देख सकती है मुझे देखती है शायद मेरी यंगर सिस्टर माय यंगर क्राउड माय नीस दे माइट बी आईइंग मी एज दिस बिकॉज अर्लियर इतना नहीं होता था अर्लियर इस उसमें हम इतना नहीं करते थे दो चार नाम होते थे जब ऐसे लिखने को आता था तो हम यही करते थे अब एवरी सेकेंड होम यू माइट बी हैविंग सम ऑफ द पीपल दैट दे आर इनटू सम बिजनेस और इनटू कंसल्टेंसी. So having said that, again, consistency that needs to be there. Plus, it's really good, and you should always be open-minded. What you can absorb, what you can go, what you can gather. It cannot. It can also be non-professional. Always, it can be a way of life you can have from somebody. Receptive to changes, receptive to learning, acceptive to learning should always be there. And plus, I believe one thing more. What young generation needs to be have that in their mind that they should always be thinking about something innovative also having that in mind कि innovation is a good thing but the cultural values what they came from and जो एक मैं किसको उसको बोलूँ I think the easiest way to put it down is कि जो एक हमारा core एक्सपर्टीज है उसके हमको अपस्किलिंग के साथ और नर्चर करके उसको अपस्केल करना चाहिए. Yeah, point. Thank you, Soumya. Thanks a lot for speaking to us. It was wonderful talking to you. Thank you so much, Kushal, and thank you SMB Connect for having me here.